गौतम गंभीर और पिच क्यूरेटर के साथ कुछ बातचीत हुई, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसा आई थिंक जब भी हम लोग विकेट देखने गए ना, तो कोचिज उधर खड़े थे, तभी उन्होंने कोई आदमी भेजा और बोला कि थोड़ा 2.5 मीटर इधर से दूर खड़े हो, विच वॉज लिटिल सरप्राइजिंग, क्योंकि क्रिकेट विकेट डे आफ्टर 5 दिन का टेस्ट मैच होने वाला है और जोगर्स पहन के हम खड़े थे, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगा। Thereafter, the Indian media went to speak to the curator, and it's on camera that he says that the Indian head coach is touchy, and he also says it could be tetchy, if that is the word used, means ill-tempered. And thereafter, he also asks the media if he is a good man. Now, this is the first in my 30 years of covering cricket that a curator is asking about the head coach on camera. Would you react to that? Don't want a diplomatic answer. No diplomatic answer. See, we all have been on the ground enough, played so much cricket, and we all know that curators are little overprotective or little, possessive about the square and ground and all. So what he said about head coach, I don't really want to comment, because that's his opinion, and everyone in this world have their opinions. But I think just looking at the wicket with a rubber spike, just day after there is a test match there's nothing wrong. You can't see that the people, curators also needs to understand that the people they are talking to, they are highly skilled and intelligent people. So for example, if you go on the ground now where we practiced, you won't even see that any bowlers in outfield would have marked with his spikes. So we keep spray. So we try and see, and that all comes from head coach, that we'll try and see that this ground also should not get damaged. So when you are working with a very intelligent and highly skilled people, if you sound a bit arrogant or if you come across like, you can be protective, but end of the day, it's a cricket pitch. It's not an antique where you can't touch, because otherwise it's 200 years old and it can be broken, So that's what I feel. I mean, that's after a day, we were with rubber standing there. You tell me day after a day, a batsman will be sliding to survive from run out. A bowler will be sliding there to stop the ball. So maybe he's thinking that we are trying to grow the grass. I mean, I don't know. He said that we are trying to get this grass. Next wicket to the center wicket. I mean, I don't know how much grass will grow in one day and what will happen in next 5 days. So sometimes you want your ground to be good and square to be good, but end of the day, it's a cricket pitch. कोच, जब आप लोग पिच देख रहे थे उसी दौरान ब्रेंडन मक्कलम और रॉब की ने भी आकर पिच देखा, तो उनको भी ऐसा बोला गया कि आप पिच से हट जाओ, या वो सिर्फ इंडियन कैंप के लिए वो इंस्ट्रक्शंस थी कि आप लोग दूर रहिए, वो कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं? और सेकंड, जब बात पिच की हो ही रही है तो थोड़ा आप बता दीजिए पिच देख के कैसा लगा, बॉलिंग का क्या चल रहा है, बुमराह का अवेलेबिलिटी वगैरह थोड़ा डिटेल में? नहीं, रॉब की और ब्रेंडन आया तभी, जब हम लोग वहां थे तभी उन्होंने बोला हो तो मालूम नहीं, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोला। तो वो फर्स्ट आंसर। दूसरा कि विकेट में ग्रास है जो नॉर्मली अपार्ट मैनचेस्टर में थोड़ा कम था, बाकी तीनों जगह पे था, वो टाइप का ही है, थोड़ा मॉइस्चर है। सो जो टिपिकल अभी तक पहले हम 3 मैच खेले, बट फिर हर एक ग्राउंड का एक सोइल का अपना वो रहता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि नॉर्मली बाउंस अच्छा रहता है, अर्ली थोड़ा मूवमेंट रहता है, देन रन्स भी होते हैं। बट दैट अगेन हम 2019 से डेटा देख के बोलते हैं 2025 में मैच खेल रहे हैं, तो जब खेलेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि विकेट कैसा खेला। आप बता पाएंगे कि क्या हमारी तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाएगी इस बात पर, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब क्यूरेटर नेट्स की तरफ आए, आपने भी उनको शांत करने की कोशिश की, गौतम वहां पर काफी ज्यादा मतलब थोड़ा सा दिखा कि अब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, वहां पे क्या बातचीत हुई? क्योंकि विकेट का मसला तो वहां से बात करके सॉर्ट आउट हो गया, इधर आकर क्या दिक्कत हुई और क्या हमारी तरफ से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज की जाएगी? मैं सोच रहा था आप लास्ट मैच के ड्रॉ के बारे में बैटिंग का पूछोगे यार, आप तो वो भी पूछ लेता हूँ सर इसके बाद। नहीं, वो वहां पे जब वो कूलिंग बॉक्स ला रहे थे ने, हाँ जी, तभी भी वो रोलर पे बैठे बैठे उसने चिल्ला के वो सपोर्ट स्टाफ को बोला कि वहां मत ले जाओ। अभी वो कूलिंग बॉक्स का वेट मेरे हिसाब से 10 किलो होगा, उसके ज्यादा तो नहीं होगा। और जो हम वहां पे चल रहे हैं, क्या जो शब्द उन्होंने चुना उससे दिक्कत थी?
जो नहीं, जिस तरीके से सब बोला तो गया? मैंने तो पर्सनली सुना ही नहीं, बट अच्छा। उसने ऐसा कुछ वहां दूर से बोला कि वहां पे मत ले जाओ वो कूलिंग बॉक्स। सो थोड़ा मेरे हिसाब से पॉजेसिव होना अच्छा है और प्रोटेक्टिव होना भी अच्छा है, बट इतना भी नहीं कि तो तभी गौतम ने सिर्फ वही बोला कि ऐसे वहां से सपोर्ट स्टाफ के साथ ऐसे बात मत कर दो, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ हम सब जो है वो हेड कोच के अंडर में आते हैं। वो कोई एनी हेड कोच बोलेंगे कि यू कांट वहां से शाउट करके ऐसा नहीं बोल सकते। सो इट वाज वेरी नॉर्मल। देन वो वहां आके ही वाज सेइंग, वो मुझे लगता है इट गॉट बिल्ट अप फ्रॉम द विकेट जब हम देख रहे थे तभी से। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर कमिंग टू ओवल most of the team knows कि Curator is not the one like easiest person to get Yes. on with, and I'm sure you also would be aware about Yeah. it. So that gives lot of answers. क्या शिकायत की जाएगी आधिकारिक तौर पर? नहीं, I don't think शिकायत का वो तो कोई मतलब नहीं। Switch between languages. I apologise for taking you back to the start of the media conference, but could I just ask you for an answer in English, if possible, Yeah. on what caused the scenes that we saw between the head of ground staff and in particular with Gautam Gambhir? What caused that this morning? So I honestly, because I was there, I felt when we were just standing on the wicket, looking at the wicket, if one of the ground staff came and said, "You stand 2.5 meters away from here," which in my cricketing career I've never seen anybody saying that, because I don't know. So literally, he was saying, "You go outside the rope to head coach and see the wicket." I don't know how you see it, because and if somebody is like brushing the shoes or somebody is trying to put something in the wicket or somebody wearing spikes, the Curator feels that it's fine. But it was very strange way of saying you go and stand 2.5 meters away from here. So I think that is what started. So because Gautam is someone, he doesn't even speak unnecessary things. He doesn't talk to anyone. Last 4 games we played, everywhere, wherever we go, all the curators where they talk, they even tell you when they're going to cut the grass, whether they're going to cut the grass. And if they don't want to give an answer, they will say, "We'll see on the weather, we'll see tomorrow." So that's a good answer. So just absolutely. So specifically, the wicket that will be used for the match. It Yeah. was Gautam was trying to just take a look at it. this Yeah, morning. yeah, and I was there. All coaches were there. Yeah. So I think looking at the wicket is something not a bad thing with the joggers on. Yes.